Hello everyone, welcome to day 4 of our project, which is employee management system. As we know that till now we have learned to create database, to create the tables, different tables like attendance department. There were total 6 tables that we have created, and then we learned to populate the data into these tables, and at last we have performed some basic queries, right? So in today's video we will perform some advanced level of queries. So let's start it, guys. So our first query is, we need to get the total number of days each employee was present in a specific month and year. So month is January and year is 2023. So now guys, let's have a look here. It is saying total number of days. Okay. Each employee was present in Jan month and 2023 year. Right? What result we want to obtain from this? Let's have a look. So क्या result हमें चाहिए? हमें चाहिए total number of days. जो टेबल हमारे पास आए वो आए कुछ ऐसी जिसमें हो total number of days. किसके हो? Each employee के. So हमें employee का डेटा यहाँ चाहिए, ठीक है? Employee का डेटा अवेलेबल है in terms of employee ID as well as employee name. Right? Now ये जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं ये कितने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसका स्टेटस चेक करेंगे वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, राइट? सो हमें एक प्रेजेंट कंडीशन के बेस पे स्टेटस कॉलम को देखना है, जो कि यहाँ स्टेटस 1 के नाम से है, और दूसरी कंडीशन है ये जो भी नंबर ऑफ डेज हम मांग रहे हैं ये हमें for the month of Jan and for the year of 23 चाहिए, 2023, right? Now ये जो डेटा है ये किस टेबल में प्रेजेंट है? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी. इसमें आपके 2 कॉलम्स आ जाएंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है? सो ये जो डेटा है ये आपका प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में, right? And this data where you will have to get the total number of days present, ये आपका सारा डेटा अवेलेबल है इन द अटेंडेंस टेबल. अटेंडेंस टेबल में ये डेटा अवेलेबल है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट द कॉलम्स, राइट? तो सेलेक्ट व्हाट? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी is present in which table? In employee table, right? As here 2 tables are serving their purpose, so we need to write it like this: employee dot employee ID. Firstly table name and then the column name respectively. Okay, so employee ID, then after that employee's first name and last name. So I'm not taking here first name and last name, I am concatenating both the names as their full name. Okay, I'm taking it as employee name. So कैसे करेंगे? We have to concat them. 2 नामों को जोड़ना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को. So for that we will use concat function. Okay, opening of the bracket, किनको किनको जोड़ना है उनके नाम लिखेंगे. So concat employee table से first name, comma employee table से last name, ठीक है? बट इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी आना चाहिए. So हम यहाँ पे एक स्पेस के लिए मेंशन करेंगे लाइक दिस. ओके, नाउ क्लोजिंग द ब्रैकेट एंड देन ये पूरा जो टर्म है जब ये कॉन्कैट हो जाएगा तो उसकी हेडिंग बन जाएगी एज एम्प्लॉय नेम, राइट? नाउ कॉमा, जो ये अटेंडेंस आईडी है इनकी काउंटिंग हमें चाहिए, ठीक है? ये हमें बताएंगे कि नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट फॉर पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सो वी विल राइट हियर count of attendance ID from attendance table. Guys, there is little spelling mistake. Attendance, and it will be A. Okay, so it will be termed as, means its alias name will be days present, right? Now ये सारा data from which table? So from 2 tables. First one is attendance, and अटेंडेंस को हमें ज्वाइन करना है किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ,
ठीक है. सो फ्रॉम अटेंडेंस टेबल एंड फ्रॉम एन एम्प्लॉय टेबल, राइट. बट किस बेसिस पे ज्वाइन करना है वो भी हमें बताना होता है. सो ऑन बेसिस ऑफ द एम्प्लॉय आईडी. सी हियर, अटेंडेंस टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल को हमें ज्वाइन करना है, राइट. सो हमें यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है. जो भी कॉमन कॉलम होता है उसके बेस पे हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, करेक्ट. सो वी विल राइट हियर ऑन एम्प्लॉय आईडी. सो पहले एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी, व्हाट आई एम डूइंग, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स किसके होनी चाहिए, अटेंडेंस टेबल के एम्प्लॉय आईडी के, करेक्ट. ज्वाइनिंग हो गई. अब हमें वो कंडीशंस बतानी है. क्या कंडीशंस, कि स्टेटस में प्रेजेंट होना चाहिए और डेट ये होनी चाहिए, मंथ ये, ईयर ये, ठीक है. सो वेयर, नेक्स्ट हमको वेयर लिखना होगा. पहले सेलेक्ट, देन फ्रॉम, देन वेयर. ओके. सो वेयर में अटेंडेंस टेबल में जो स्टेटस है that will be equal to what, present, equal to present. Three conditions basically we have to put here. So we will write and here. Okay. And month, अब हमें month extract करना है. See, यहाँ पे date given है. इस date में से हमें 01 वाला month चाहिए. So हमें month extract करना है. वो month कैसे extract होगा, using the month function. ठीक है. हमें month चाहिए, किस में से चाहिए, attendance table के date column से. ओके. क्या होना चाहिए वो मंथ, दैट मंथ विल बी इक्वल टू 01. ठीक, ये मंथ की कंडीशन आ गई. नाउ एंड अब हमें ईयर की कंडीशन लिखनी है. सो ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी विल यूज ईयर फंक्शन. फ्रॉम द अटेंडेंस टेबल वी वांट टू गेट, फ्रॉम द अटेंडेंस टेबल इन डेट कॉलम we want to extract the year. That year will be equal to what? Equal to 2023, right? Now what else? What else में अब हमने यहाँ count यूज किया है guys, right? तो जब भी हम aggregate function, count is aggregate function, जब भी aggregate function यूज करेंगे, then we have to tell कि किस बेस पे counting हो रही है, grouping किस बेस पे हो रही है, ठीक है. सो ग्रुपिंग जो हो रही है वो हो रही है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे. हमें पर एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय वाइज डेटा बेसिकली चाहिए, राइट. सो वी आर राइटिंग हियर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम. ओके. Now run this. So after running, you can see that employee name complete आ गया, first name and last name नहीं आया यहाँ पे, ठीक है. So first employee ID name is John Doe and जो total number वो present थे only 1 day. Very lethargic person. एक दिन के लिए present था ये बंदा केवल. फिर Jane Smith 2 दिन के लिए present था for the whole January month. That's like it is not acceptable at all. Okay, so this is like this. Now here you can reduce this code by deleting this. Employee यहाँ पे नहीं भी देंगे तो काम हमारा चल जाएगा, ठीक है. सो करके देखते हैं. सो एम्प्लॉय को हमने यहाँ से हटा दिया, फिर एम्प्लॉय को यहाँ से भी हटा दिया और एम्प्लॉय को यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन एवरीथिंग अबव. सो नाउ रन अगेन. लेट्स सी क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा. यस, हमारे पास बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है, ठीक है. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेरी गाइस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर सेकंड क्वेरी. And this is our next query, which is to calculate the net salary of employees, of all employees after bonuses and deductions, and list whose net salary exceeds a certain threshold, which is 60,000 here. Okay, so let's have a look on the salary table. Here we have a salary table where salary is there, bonus is there, and deduction is there. Okay, see, net salary. We have to calculate net salary of all employees, right, after bonuses and deductions. Okay, then there is a condition that net salary where which exceeds 60,000, right? So what will be our result? Our result should look like this.
there should be employee detail, which can be either ID or employee name or both, right? Employees, and then their salary, net salary. Now, this net salary is what? So, net salary will come when we will do some plus minus. What is this plus minus? So, we have one salary, okay? Then we have to add the bonus into the salary. And then we have to reduce the deduction amount जो हमारी salary में से कट रहे हैं. जब हम salary में bonus add कर देंगे और deductions को subtract कर देंगे, then we will get our net salary. This is it, okay? यही हमें data result चाहिए, यही output चाहिए. So what columns we need to select here? Employee ID and employee name, first name or last name. Again, we will concat them, right? Then we want another column which is net salary. So net salary के लिए we want salary column, bonus column and deduction column. Okay guys, and ये सारा data, ये data आपका available है in the employee table, and this data is available in the salary table, right? There is a need of join, and we can avoid this join how? If we will eliminate this thing. अगर हम employee name हटा दें, ठीक है, so हमारा जो salary table है, हमारी salary table में employee ID given है, so employee ID के base पे हम net salary निकाल सकते हैं. But to get a more clear picture, we will select this employee name. So here we will join employee table and salary table. Fine. Okay. Now let's write our code. So we have to select firstly, select what? From employee table, employee ID, comma, concat from employee table, and first name, and what? And from employee table, last name. Okay, and then we have to give the space between them like this, and I'm giving it as employee name. The name of the column will be employee name. Okay, comma, we need to select the salary also from the salary table, salary dot salary. Okay, and I'm giving this also one alias name which is base salary. Okay, comma, from salary table again I'm giving it a bonus, I'm taking bonus. Okay, then from salary again we will take deduction. Okay, now one column which we are going to make is net salary. ठीक है, सो वो कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए सिंपली हमें यहाँ फॉर्मूला लिखना होगा नेट सैलरी का. सो हमने क्या फॉर्मूला दिया था? दैट वाज सैलरी डॉट सैलरी प्लस सैलरी डॉट बोनस माइनस सैलरी dot deduction. Okay, as net salary. In this way we can create one more column like this. Okay, now ये सारा data हमें कहाँ मिलेगा? So from salary table and employee table. So from salary after joining it with employee on the basis of salaries employee ID equals employee ID, employees table, employee ID. Okay. Now there was one condition also. So where salary dot salary plus salary dot bonus minus salary dot deduction greater than 60,000. Okay. Now run this query, run this code. So here is our result. Here you can see
that in our result there is employee ID and the name of employer, their base salary and their net salary along with bonus and deduction. Okay, easy guys. Now come to our next query. Here is our next query. It says to rank departments. Okay, rank departments based on the number of active employees. Okay, based on the number of active employees and their total salaries. Okay, so in short, what we want? We want what? Department's rank and their number of active employees with their total salaries. So what result we want by looking at this? We want something where there is department information. So department information कैसे मिलेगी? If we have department ID or department name, right? Fine. Now we want active employees. So there will be one column which will be like active employees. Okay. Then also we want the total salaries. So total salaries. Suppose there are 15 active employees in some department, right? So the sum of their salaries will be here as total salary. Okay. And then the last will be, we want the ranking. Ranking of what? Department wise ranking. So here department ranking. These all are the things which we want, correct? So the columns, what are the columns? Department ID, department name. Okay, what else? To get this active employee, we need the employee ID also, correct? Now what else? Salary column we want, okay? And anything else? We want department rank, okay? This is not a direct column given. We will create this column. Okay, so let's have a look now here. So first of all, we will have to select our columns. So department ID is given in department table, department.department ID, okay, and department.department name, okay. Now we want active employees. So active employees कैसे मिलेंगे? जब हम काउंटिंग करेंगे किनकी काउंटिंग करेंगे? एम्प्लॉय आईडीज की, और जो गिवन है एम्प्लॉय टेबल में. सो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, ओके. देन इसको एक नेम दे देंगे विच इज एक्टिव एम्प्लॉय, ओके. नाउ हमें टोटल सैलरी चाहिए. सो हमें सैलरी कैसे मिलेगी? सैलरी कॉलम से. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज सम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, salary from employee table dot, okay, as total salary. This is what we want. Now we need to rank the system. What system? We need to create one new column which was department rank. Remember, department rank was one column. So department rank कैसे create करेंगे? For that we need to use this rank function. Rank function over, ठीक है, ranking करनी है on which basis? Over हमारे पास जो employees हैं उनकी counting आ जाए in descending order, ठीक है ना. जो एम्प्लॉइज हैं उनकी काउंटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, उस बेसिस पे हमें रैंकिंग करनी है, करेक्ट. सो वी विल राइट ऑर्डर बाय, बिकॉज वी वांट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ काउंट ऑफ व्हाट? काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी. इसकी हमें काउंटिंग करनी है ना, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है. एंड देन एंड में हमको डिसेंडिंग लिखना होता है, करेक्ट. वन मोर थिंग जिसके बेस पे हमें रैंकिंग करनी है. सो दैट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ठीक है. सो अगेन वी विल राइट सम ऑफ एम्प्लॉय डॉट सैलरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. ये हमारा हो गया ऑर्डर का यहाँ तक. नाउ वी हैव टू give the name of this column which is department rank. So as department rank. Okay guys, now these all data is available in which table? So we are taking these data from two tables. First is department and second is employee. So we will write from
department. Joining this department with the employee table. On which basis? On the basis where department IDs are same. So department dot department ID equals employee dot department ID. ठीक है? Now one condition is also here, which is there will be active employees. ठीक है ना? हमें जो एम्प्लॉय लेने हैं वो एक्टिव होने चाहिए. इट मीन्स जो भी उनकी हायरिंग डेट है, सी लुक एट हियर, whatever be their hire date, okay, this date should be lesser than the current date. तभी तो वो एक्टिव कहलाए जाएंगे. अभी भी करंटली हमारे ऑफिस में वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं. ठीक है ना? जब हायर डेट लेसर होगी than the current date, right? So we will write here where employee dot hire date is lesser or equal to current date. Okay, this is a keyword in the MySQL. Now, as we have used the aggregate function, which was count and sum, so we need to group them. ठीक है? क्योंकि counting किस बेस पे कर रहे हैं, किस चीज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. So we are doing it on the department wise. Department name के अकॉर्डिंग हमें उसकी हम counting कर रहे हैं. ठीक है? So grouping on the base of department ID. So department dot department ID comma department dot department name. Okay, now we will write here order by, because the result, whatever will be the result, we want them to order as per their rank, department rank. Okay, I have given one space here. Okay, now it will run. So this is our result, guys. Here it is department ID and department name. So you can see that in human resource department, there are 11 active employees and the sum of their salary is this 7,30,000. Okay, and its rank is 1. In the second position, there is IT department. Active employees are 10, and third position, sales and marketing. Active employees are 9, and this is their ranking. So this is it for this video, guys. In the next day, we will learn to visualize the data. So stay tuned for tomorrow. Subscribe this channel so that you will get the notifications, okay? And for day after tomorrow, we will learn to how to make the report. That is a very essential step, because whatever work we have done till now, we should know how to present it. Okay, so stay tuned with me and take care, guys. Keep practicing. Bye-bye. See you.